Good morning, students. Now we start from where we left in the last live session of yesterday, the data link layer of the OSI model. Now in this layer we revise that we left at this point na कि DLL the responsibility of the DLL is to transmit it to host using its MAC address. We had a lot of discussion regarding what is a MAC address. The packets received from network layer is divided into frames depending on the frame size of NIC, and DLL also encapsulates sender receiver MAC address in the header of it. And the receiver's MAC address is obtained by placing ARP, that is address resolution protocol request, onto the wire asking who has that IP address, and the destination host will reply with its MAC address. So header जिसकी हम बात कर रहे थे वो ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, फ्रेम हेडर, पैकेट एंड द ट्रेलर. फंक्शंस ऑफ डेटा लिंक लेयर, पहला फंक्शन है फ्रेमिंग. एज यू कैन सी, मैंने क्या बोला था, डेटा लिंक लेयर पे जो आता है डेटा ट्रांसमिट होकर फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर थ्रू ट्रांसपोर्ट इन नेटवर्क लेयर, तो इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ पैकेट. पैकेट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्रेम्स इन द डेटा लिंक लेयर. डेटा लिंक लेयर में you have the first function as framing. Framing is a function of data link layer. It provides a way to say for a sender to transmit set of bits that are meaningful to the receiver. Okay, this can be accomplished by attaching a special bit pattern to the beginning and end of the frame. जिसको बोलते हैं beginning में जो part add होता है पैकेट के वो header कहलाता है, end में जो add होता है वो trailer कहलाता है. The data link layer translates the physical raw bit stream into packets known as frames. I already told you. जब डेटा, एक मेल का एग्जाम्पल लिया था इफ़ यू रिमेंबर, जब हम मेल ड्राफ्ट करते हैं इनटू माय मेल कंपोज मेल ऑप्शन ऑफ माय मेल बॉक्स, दैट इज माय एप्लीकेशन लेयर. आफ्टर एप्लीकेशन लेयर थ्रू सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर वी कम टू ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर में उस बड़ी मेल के छोटे छोटे पैकेट्स बनाए जाते हैं, so that larger set of data is broken down into smaller pieces, that is known as packets. That job is done in the transport layer. Routing वाला काम होता है network layer में, which is the next layer of discussion. And data link layer में these packets that are received from the as an output from the transport layer, they are transformed into frames. लिखा है ना, data link layer translates the physical raw bit stream into packets known as frames. The data link layer adds the header and trailer to the frame. The header which is added to the frame contains the hardware destination and source address. That is the MAC address of the source machine and the MAC address of the destination machine. Okay. Second function of DLL is physical addressing. After creating frames, data link layer adds physical addresses. बात कर चुके, MAC address of sender and receiver in the header of each frame. The frame is transmitted to the destination address mentioned in the header. तीसरा काम होता है error control. DLL provides a mechanism of error control in which it detects and retransmits the damaged or the lost frames. Flow control. The data must be constant on both sides, else data may get corrupted. Thus flow control. Flow control का मतलब होता है the speed of data sending should always match with the speed of data receiving. If my receiving end is receiving the data packets in a set order, yeah, in the set speed, so as a sender it is my responsibility to keep track कि जिस स्पीड में हमारा सेंडर कैच कर रहा है डेटा पैकेट्स को, हम उसी स्पीड में यहाँ से सेंड करें. अदरवाइज माई सेंडर विल बिकम ओवरवेल्म विथ पैकेट्स. मीन्स वो एकदम से उसके पास ओवर शावरिंग हो जाएगी पैकेट्स की, और उस चक्कर में क्या होगा, फ्यू ऑफ द फ्रेम्स वुड बी लॉस्ट आउट और दे मे गेट करप्टेड. So that flow control mechanism has to be implemented by the data link layer. Don't confuse, this would be a part of transport and network layer also functioning. Access control. When a single communication channel is shared by multiple devices, MAC sublayer of the data link layer helps to determine which device has control over the channel at a given time. That is, इस layer पे जो network devices use होते हैं वो bridges and routers and all use होते हैं. तो वी कैन से दैट स्विचेस, ब्रिजेस आर बीइंग यूज्ड जहाँ पे मल्टीपल कनेक्शंस होते, एक ही फिजिकल चैनल यूज़ करते कई सारे नोड्स. यहाँ पे यू कैन से दैट कि डेडिकेटेड पोर्ट नहीं होता या डेडिकेटेड लाइन नहीं होता, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इज नॉट देयर. ओके. पैकेट्स इन DLL लेयर इज रेफर टू एज फ्रेम. बार बार हमने बोला, नोट करके इसीलिए लिखा है. DLL layer is handled by NIC
and device drivers of host machine. Switches and bridges are the data link layer devices. जैसे पहले बताया था hub and repeaters and modems are the physical layer devices. तो उसी तरह DLL पे कौन सी devices use होती है? Switches, bridges, routers and all. Routers basically network layer पे आ जाते हैं, routing का काम होता है. So that completes my second layer. Now the third layer which comes up is the network layer, as you can see. This is the third layer that manages device addressing, tracks the location of device on the network. It determines the best path to move from source to destination. इसी को बोलते हैं routing. हमने कई बार ये एग्जाम्पल लिया है कि आपके घर से कॉलेज जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, मगर you always choose the shortest path. Why? Because that shortest path will you will be spending lesser time and energy and effort to reach to your school or college. And if you are traveling through public conveyance, you will be spending less money if you are following a shortest path. Okay, so networking में भी यही होता है कि when a data packet is transmitted over a network, तो network layer का job होता है कि उस network पर उस पैकेट की जो डिलीवरी की जाए वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ से की जाए. जब हम शॉर्टेस्ट पाथ की बात करते हैं तो हमने इसके लिए एल्गोरिदम्स पढ़े थे डेटा स्ट्रक्चर में. इफ़ यू रिमेंबर, Prim's algorithm, Jakatra's algorithm, Kruskal's algorithm, they were all the types of algorithms which help us to determine which is the shortest path in a given network of nodes from destination A to the destination B, source A to destination B. So okay, based on network conditions, the priority of services and other factors. The data link layer is responsible for routing and forwarding of the packets. Routers are the third layer devices. That is, जैसे bridges and switches are second layer devices. Hubs and modems are first layer devices. Routers are said to be the third layer devices, layer 3 devices, because they are specified in this layer and used to provide the routing services for internetworking. The protocol used to route the network traffic are known as network layer protocols. Example इसके हैं IPv4 and IPv6. यहाँ IP लिखा हुआ है केवल, so it is understood. V means version. IPv4 पुराना version है, 4th version, and अभी हम लोग जो networking में use कर रहे हैं that is IPv6. Okay, Java programming में I don't know how many of you remember, शायद आपके syllabus में था नहीं तो शायद आपके batch में नहीं बताया होगा, previous semesters में बताते थे. IP config एक कमांड होती है, कभी वक्त मिले या घर पे अपने लैपटॉप या सिस्टम्स पे भी आप कमांड प्रॉम्प्ट पे देके देख सकते हैं. IP config कमांड आप कमांड प्रॉम्प्ट पे देंगे तो यू विल फाइंड कि एज एन आउटपुट उस कमांड का आपको IP एड्रेस एंड गेटवे एंड सबनेट मास्क ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. IP config इज IP कॉन्फ़िगरेशन कमांड. अगर आप IP config कमांड देते हैं तो वो रिजल्ट में आपको बताता है कि आपके सिस्टम की IP इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, कॉन्फ़िगरेशनल इन्फॉर्मेशन. Coming on to functions of network layer. Now, as a function of network layer, we talk about internetworking. Internetworking is the main responsibility of network layer. It provides logical connection, addressing. I said logical addresses यहाँ पे होते हैं source and destination के header. Routing, I always tell you कि routing की is the major component of network layer. Determines best optimal path of multiple paths out of multiple paths from source to destination. And packetizing, that is network layer receives the packets from the upper layer and converts them into packets. This process is known as packetizing. It is achieved by IP protocol. Now we say that कि network layer पे ये चार main काम होते हैं: addressing, routing, packetizing and internetworking. So in this way we have covered the first three layers of this OSI model. Lower layer कहलाते हैं ये. These first three layers, physical layer, data link layer and the network layer, पिछले जो हमने आपको document दिया था lecture 4 का उसमें देखिएगा, they are known as lower layers. और upper layer में अब इसके बाद वाले layers आते हैं, transport layer, then next is the session layer, presentation layer and the application layer. So top 4 layers are upper layers and next 3 are the lower layers. So by this I will stop my video lecture and the rest of the 4 layers will continue in a live lecture for tomorrow. Okay, thank you.